In MA Part 1, you might have studied MOOS test, Family Environment or Family Adjustment Scale. Similar to that, in terms of Indian population, there is another test developed by Dr. Sharma and Nigam. The test, it is in Hindi, having 84 statements in it, and a response style and some other factors which addressed by this particular test, so that we are going to study. The same aspect, it will be important for us in 4th semester, because in 4th sem we are going to study family therapy. So diagnosis साठी assessment आणि therapy हे दोन्ही important आहे. So let's have a quick look why and how family it is important. For the child, family is the first institute where he learns many things. So the communication style, pattern, manner, etiquettes, everything. The way parents interact, cultural style, upbringing pattern, everything, norms. So child learn many things in family. So society means what? Other than self is what is society. And that's why family is the first society's representation for the child. जग म्हणजे काय असतं हे मूल कुठून शिकणार, तर ते आपल्या घरातूनच शिकणार. आई वडील, बहीण भावंड, सिबलिंग्स आणि आणखीन काय. Easy to understand because now we are in MA Part 2. So to what extent joint family is having plus and minus points in shaping our personality as well as even nuclear. So दोन्ही टाइप्स मध्ये काही ना काहीतरी प्लस अँड मायनस किंवा अदर advantages and disadvantages हे आहेत which affects the environment and even upbringing style. How far parents are supportive, how far they are caring, how far they are paying attention, and how far they are having a very casual approach. This is what it creates environment in our family. घरातलं वातावरण कसं आहे त्याचा आपल्या बऱ्याच गोष्टींवरती कळत न कळतपणे डिरेक्टली अनडिरेक्टली असा तो परिणाम हा होत असतो. Actually rightly said, authoritarian, do as I say. कहा था ना कि 7 बजे आना, तो 7 बजे मतलब 7 के 5 पहले ही आप मुझे घर पे चाहिए. This type of controlling, authoritarian. You don't have a choice. Do as I said. मी सांगतोय तसं तू कर. इधर ही बैठना, उधर नहीं बैठना, यही खाना है, तुम्हें ये नहीं करना है. खाना पीना पासून फिर वो इवन ड्रेसिंग स्टाइल पे आता है, फिर धीरे धीरे आगे एक करियर को लेके फिर शेड्स चेंज होता, डिग्री चेंज होते. अथॉरिटेरियन, दे फोकस्ड ऑन ओबीडियंस. अगेन इट डजंट मीन कि ओबीडियंस नहीं होना चाहिए, फैमिली में डिसिप्लिन होना ही नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. बट इट्स ऑल अबाउट द डिग्री विच मैटर्स. Punishment over discipline, this is what it is, core identity for this type of parenting. And sometimes they do give harsh punishment. एक बार एक लड़का काउंसलिंग के लिए आया था, and at that time he said कि सर, मी जेव्हा 8वीत होतो तेव्हा माझ्याकडून एक अमुक अशी चूक झाली होती, आणि ते जेव्हा वडिलांना समजलं तेव्हा त्यांनी लिटरली पोत्यात घालून मला मारलं. यू कॅन इमेजिन पेरेंटिंग. आवर मेन टॉपिक इज फैमिली एनवायरमेंट स्किल. सो डायग्नोस्टिक टूल तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट्स कैसे है, कितने हैं और क्या है, और फिर अदर फैक्टर्स एंड ऑल. बट उसके लिए बैकग्राउंड जो मालूम होनी चाहिए वो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज यस, परमिसिव. जो करना है करो, सबके लिए परमिशन है. लेट नाइट घूमना है, घूमो. पढ़ाई करनी है, किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक. आज पिझ्झा ऑर्डर करायचा झोमॅटोवरती, बरं ठीक आहे ते कर. आज रात्री फक्त कॉफीच प्यायची आहे, बरं ठीक आहे ते कर.
Parents have no control, no involvement, no attachment, nothing is there. They don't enforce any kind of rule. The system is lacking. घर म्हटल्यानंतर एक काहीतरी सिस्टीम आपण ज्याला म्हणू, किंवा मराठीमध्ये ते एक आहे की घर असावे घरासारखे, नको तर नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नको तर नुसती नाती, वगैरे वगैरे. वो एक बहुत अच्छा सा पोएम टाइप है वो. सो दैट टाइप, बट इट इज कंप्लीटली मिसिंग. परमिशन, तुमको जो करना है करो. You can imagine the psychological upbringing of child in this type of family. They don't have any control. They don't have anyone to give some kind of direction. Third thing is uninvolved. A child is there who is so eager to talk, who is so eager to communicate, to share. कि मॉम डॅड आज स्कूल में ये हुआ, आज कॉलेज में ये हुआ, आज बिल्डिंग मध्ये खाली हे खेळत होतो आणि मग मला आमका मित्र किंवा तो पर्टिक्युलर फ्रेंडनी मला हे सांगितलं, और फिर हमारा ये ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ. ही इज सो ईगर, ही इज सो क्यूरियस, सो विलिंग टू टेल, टू शेअर. And any one of the parent is like, आम्हाला जरा आमचा वेळ दे, आम्हाला टीव्ही बघू दे, हमें काम करने दे, बाद में देखेंगे, उसमें क्या है. ठीक है, टिपिकल स्टोरी सांगतो शाळेतली, टीचर ने किया, फिर फ्रेंड ने किया, ये बोरिंग है, जाने दे, बाद में बता, आम्हाला न्यूजपेपर वाचू दे. Uninvolved. And of course, the most healthy and more appropriate is authoritative. They are creative. This body language speaks a lot. This simple picture. You are not alone. I am with you. You go ahead. I'll be with you. You try. I am there with you. I am there for you. This thing, it is even important and should be observed even in online teaching learning. 7-8 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहा है. 1-1.5 घंटे के बाद उस रूम में सिर्फ एक व्हेरी कैजुअल राउंड होना के ओके सो आहे ना नेटवर्क, अगदी सगळं व्यवस्थित आहे, समजतंय ना तुला टीचरचं, अच्छा कोणता क्लास चालू आहे, मॅथ्स आहे का, ठीक आहे बस. Authoritative, it is like a monitoring. Parents are aware what their children are doing, in which particular phase they are going, what they are facing. This awareness, being in touch, it is important. इथे कंट्रोल नाही आहे, पण इथे सपोर्ट आहे, अथॉरिटेटिव्ह. इफ यू हॅव एनी डाऊट, एनी टाइम यू कॅन कम अँड आस्क मी, आय एम देअर. This is most important. The style affects family environment. So again, coming back to our main test, the name itself is like family environment scale. Author is Dr. Sharma and Nigam. In total, there are 84 statements. The test, it is in Hindi. Some of the items are positive items and some of them are negative. This particular test, it assess 5 dimensions. Like NeoPI मध्ये जसे 5 आहेत, so वैसे इसमें भी 5 है, but अलग है of course. For each statement, there are 5 types of responses. Responses like this: mostly, frequently, sometimes, least, and never. These types of responses are there for each statement. And like this, we can get some score. Higher the score, higher the environment. Lower the score, lower the environment. Like that. Statement is like, बालक की हर इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं. Mostly, frequently, sometimes, least, never. बालक को अपने मित्रों के साथ खेलने की छूट देते हैं. 5 types of options. बालक को माता पिता की हर आज्ञा माननी पड़ती है. चोट लगने पर भी अपने बच्चे को ही डांटते हैं. बालक को डांटने के साथ उसे डांटने का कारण भी बता देते हैं. The statement, it is most important.
सो अशा स्टेटमेंट्स मधून हे 5 आयटम्स किंवा 5 जो मेन कोर आस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट or diagnostic marker, if we say, the first factor is acceptance. Acceptance in the sense, acceptance to child oriented. Accept the child the way he is, in spite of his plus and minus, strengths and weaknesses. How far he is developmentally appropriate, how far he is achieving his developmental milestones, everything. Respecting the child, it is also part of accepting the child. So the way we communicate to our children, it reflects a lot. शेरलॉक होम्सचं एक ते जे त्या सगळ्या केस स्टडीज किंवा ते एक एक मिस्ट्रीज वगैरे आहे, सो त्याच्यामध्ये एका कुठल्या तरी केसमध्ये असं आहे, व्हेन शेरलॉक होम्स is discussing something to his colleague, Dr. Watson, and he's saying that पेरेंट्स के बिहेवियर से चिल्ड्रन का पता चलता है और चिल्ड्रन के बिहेवियर से पेरेंट्स के बारे में भी पता चलता है. The way the child behave, that speaks a lot about their parents, and same thing vice versa, the way parents behave, that gives us a more clear cut idea about parents. हॅलो, मी आता लेक्चर मध्ये आहे, अर्ध्या तासाने कॉल करतो. हो करतो. येस. Need to take account of what child actually needs. Then only we can accept. Second thing is autocratic, authoritarian. It is different. Autocratic in the sense many restrictions are imposed on children. For what? In order to discipline them. यहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, फिर ये मत खाओ, मग या लोकांशी बोलू नका, मग त्या लोकांशी बोलू नका, असे कपडे घालू नका, मग तसे कपडे घालू नका, ऐसे मत बैठो और फिर वैसे मत बैठो, मग तू मुलगा आहे ना, मग तू हे करायचं आणि तू ते करायचं नाही, मग तू मुलगी आहे ना, तू असं नाही हसायचं, मग तू तसं नाही बसायचं. इन लोगों के साथ ऐसे मेनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज. ऑटोक्रेटिक, controlling, dominating nature, family and environment. Third thing is overprotection. Being possessive, it is different. Being concerned, it is different. And overprotective, it is different. Prevention of independent behavior and prolong of infantile care. This type of parenting affects child's adjustment level to a great extent in child's future. नहीं, वो हमारा लाडला है, नहीं, तो एकुलता एक आहे, नाही, ते आमचं नवसाचं लेकरू आहे, असं कसं त्याला बाहेर सोडायचं. तो 22, 20, 25, 30 साल में उस बच्चे को he never learned, he never get an opportunity to go outside. जब भी कभी बाहर गया अपने पेरेंट्स के साथ ही, और जब कभी जॉब की वजह से बाहर जाने की बात आई तो फिर एकदम बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, अरे बाप रे क्या होगा, कैसे होगा, होम सिकनेस एंड ब्ला 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 ब्ला. ते ऍडजस्टमेंट इश्यूज का आणि कसे डेव्हलप होतात, कारण कधी तसं चान्स, अपॉर्च्युनिटी, ते रिस्क, तो सपोर्ट, ते एक्सपोजर कधी दिलंच नाही. कारण सारखंच बाहेर ठेवायचं हे पण पुन्हा एक्स्ट्रीम झालं. बट देयर शुड बी अ बॅलन्स इन बिटवीन. सो दोज आर ओव्हर प्रोटेक्टिव्ह, they are over possessive, and children of these types of parent or these types of family environment, they tend to develop fear, phobia, anxiety issues a lot, because they have been always under that particular thread. अरे नहीं हे नको करू, अगर ये हुआ तो, त्या थॉट मध्येच त्यांचं अपब्रिंगिंग कॉन्स्टंटली झालंय. फोर्थ वन, as we have discussed, permissiveness. So providing opportunity to child to express freely and act to his or her desire without interference from parents.
ये पॉकेट मनी लो और जो करना है करो, अगले महीने की जब 5 तारीख आएगी तब हम देखेंगे. हे पण एकदम एक्स्ट्रीम झालं. इन बिटवीन अगर हमने उसे 500, 1000, 800 जो कुछ भी दिए, व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग? अगर ये नहीं होता है तो फिर बड़े बड़े स्टार्स के ऐसे बड़े बड़े बेटे फिर कैसे पार्टी में और ड्रग्स के रैकेट में कैसे क्या क्या होता है. रिसेंट अपडेट्स वी ऑल हैव, नो नीड टू टेक नेम फॉर इट. Giving opportunity to express feelings, it is different. And allowing him or her to do what they want, so that is also different. And fifth one is rejection. Conditional love. If you behave in this way, तो ही तू मेरा लाडला है. अगर तू ये नहीं करेगा, then तू मुझे पसंद नहीं. That's it. The child has no right as a person, no right to express his feelings, and no right to uniqueness, no right to become an autonomous individual. Family environment, this point it is important to understand even with reference to first chapter's point, data gathering. So when we are taking case history and case study of a particular patient, sometimes it may need to take history of his family environment and his upbringing. मे बी अभी उनका एज 40 होगा या फिर 45 होगा, बट उनका अपब्रिंगिंग कैसा है अगर वो हमें पता चला तो इनके बारे में और इनके फ्यूचर म्हणजे ह्यांचं अपब्रिंगिंग कसं होणार. इट इज लाइक जो हमने देखा है, जो हमारे साथ हुआ है, वी टेंड टू बिहेव इन द सेम मैनर. इफ वी डिडंट गेट एनी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एट दैट टाइम, हमारा पेरेंटिंग ऐसा हुआ है तो हम भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमने वही देखा है. और कुछ अलग होता है ये हमें मालूम ही नहीं है एज अ ले पर्सन. सो दीज पीपल से और रिस्पॉन्ड इन द सेम वे. ते काळजी आणि प्रेम वगैरे सगळं बरोबर आहे, पण आम्हाला माहितीच नाही काळजी कशी घ्यायची मुलांची, प्रेम कसं करायचं. कारण आमची काळजी, आमच्यावरती प्रेम कधी कोणी केलंच नाही. लिटरली दे से इन दिस वे. So these 5 aspects have been covered in this test, family environment scale. 84 statements are there and having 5 types of options, positive to negative.